more. And then we will start with today's topic. Okay, so I haven't received anyone's notes yet except Laura's. Laura has sent me the notes that I've asked to, but I haven't received anyone's else yet. When are you going to submit me that? When am I receiving all other people's assignment that I have given? Am I audible to everyone? Yes, ma'am. Yeah, so why aren't you guys responding? Okay, so everyone just turn on your cameras. Whoever can does not have a network issue while turning on the cameras, can please turn on your camera. Yeah, thank you. So today we are going to discuss about demand schedule. Okay, so who can explain me what is demand schedule? Have you guys ever looked into your books ahead of it? आगुरी केबे बहिरे डिमांड स्केड्यूल टा पढिबा ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ କେବେ ପଢିଛ ବୁଝିଛ? No, ma'am. Okay, so we will start with demand schedule today. So a demand schedule is one way of showing the relationship between the price of a commodity and its quantity demanded. It's a tabular statement that shows different quantities of a commodity that would be demanded at different prices during a particular time period. Demand schedule is nothing but it is a representation or it is a tabular representation of price and the quantity demanded. ଯେତେବେଳେ Ma'am. ଯୋଉ price ଟା ହଉଛି ଯେତେବେଳେ Ma'am. yeah, who is it? Ma'am, Yeah. voice break ଆପଣଙ୍କର अच्छा Yes, ma'am. मते तो voice Voice perfectly सुभाउछ. I think the network glitch is from your side because Suman, your voice is also not properly audible to me. Am I audible to everyone else except Suman? Yes, ma'am. ଟିକେ voice ଶୁଭୁନି ma'am problem ହଉଛି मैम ब्रेक हो जाए आपन वॉइस Sorry, I am not audible to anyone. ma'am ଆପଣଙ୍କ voice break ହଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ Okay. Okay, just wait. But I am able to see you guys properly. I can listen what you're speaking. I don't think it's from my side. Okay, just wait a little bit. Let me check. Am I audible to everyone now properly? Am I audible? ma'am Yeah. ma'am ଟିକେ voice break ହଉଛି Sure. Okay. Is it particularly to Suman or everyone else? Like ମୋ voice ସମସ୍ତଙ୍କୁ break ହେଇକି ଶୁଭା ହଉଛି ନା ଖାଲି ସୁମନକୁ ଶୁଭା ହଉଛି? କାରଣ ମତେ ତମମାନଙ୍କ voice ପୁରା clearly ଶୁଭା ହଉଛି. yes ma'am ଏବେ ଆପଣଙ୍କ voice clear ଶୁଣାଗଲା Okay. So what about rest? ସମସ୍ତଙ୍କୁ voice ଶୁଭା ହଉଛି? yes ma'am Okay. yes So ma'am ସୁମନ ତତେ ଏବେ ଶୁଭା ହେଲା? yes ma'am Okay. Okay, so what I was saying was, what is demand schedule? Demand schedule is nothing, it's just a tabular representation of price and quantity demanded. क्यों price रे केते quantity demand ହେଇଛି ताको जेतेबेले हमें गोटे tabular representation करूचे ताको हमें demand schedule कहूचे. Understood?
बुझेसला is there something more difficult to understand this concept a definition बुझिया पे किसी problem हो की No, ma'am. ओके सो व्हेन एटी देखो एबे गोटे मो ट्रैवलर रिप्रेजेंटेशन करिछि गोटे पीपीटी रे तुमको शो करथिबो प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड लेफ्ट साइड इज द प्राइस एंड राइट साइड इज द क्वांटिटी डिमांडेड व्हेन द प्राइस इज 1 rupees the demand is 800 when 2 rupees it's 700 when 3 rupees it's 600 when 4 rupees it's 500 टंका रे थिला बेले 800 डिमांड थिला 2 टंका हला बेले 700 हला 3 टंका हला बेले 600 हला 4 टंका हला बेले 500 हला understood जेतेबेले एई जो information को we will put it in a tabular representation form that is known as demand schedule understood now किछ अछि बुझिया पे problem होछि बुझिया पे No, ma'am. सुमन No, ma'am. understood Yes, ma'am. okay Sushri understood Yes, ma'am. okay so I would request everyone whatever you feel like you do not understand ask me directly ask me immediately okay I do not want it in the latter stage knowing that she or he couldn't understand that in the class etc etc okay it's an interaction class that's why I always ask you people to please turn on your camera so that that can be interaction economic is better understood when it is interacted well okay okay now we will understand what are the types of demand schedule okay there are two types of demand schedule individual demand schedule and market demand schedule okay individual demand we have learned in yesterday's class if you guys remember it well who can say me what is individual demand I'll later tell you what is individual demand schedule kali hame individual demand market demand padithile kiye mate koi paribo what is individual demand and what is market demand Suman what is individual demand Ma'am, the quantity of commodity which a single consumer demands or single consumer buys is called individual demand. Okay, so Soumya, what is market demand? Soumya, were you present in the previous class? No, ma'am. Okay, so have you taken any notes from your any of your friends? No, ma'am. Why? You should at least ask what has been studied. Economics is needed to be understand. Economics sorry to padhai chi. I would request everyone che absent ruhi by chance ko problem pai class attend kari parni. Then please consult your friends ki kali kona padhai cha. Maybe ଯେତେବେଳେ ତମେ ତମ friend କୁ ପଚାରିବ when he or she will explain to you then ସିଏ ବି ବୁଝିବ ତମେ ବି ବୁଝିବ it goes both ways that's why I always say economics is a class of interaction when you do interaction well you will understand the concept very well okay so किए भी तम सांग थे आ भितर जहाँ को भी पचारि परिबो then ask Suman instead Suman will make you understand the concept well right Suman okay so what is market demand market demand के मते कहबो कोन what is market demand who will say me Ma'am, it is the demand of whole people in the market. It is the aggregated demand of all people and their choices. Very good. Suman has understood the concept of individual demand and market demand very clearly and very well. I'm happy with Suman in that. Thank you, Suman. Okay, now we will understand what is the individual demand schedule and what is in the market demand schedule. Okay, now the individual demand schedule. Suman, read this presentation, this slide for me. Individual demand schedule is the table which shows various quantities of a commodity that would be purchased at different price by a household during a given period. When in a particular Continue. when a particular time when in a particular time period particular commodity is purchased by individual or household in different quantities and in different prices, that representation is tabular form is known as individual demand schedule. Examples: sugar, salt, etc. When individual demand schedule, we will understand it through the example first. Suppose the sugar price per kg was ₹100, then we are going to buy 1 kg in that way. गोटे वीक रे धर कर सुगर र प्राइस केजी पे 100 अछि हमें से वीक रे केजी किनबा जेतेबेले 90 हबा हमें 2 केजी किनबा
80 हेले 3 kg 70 हेले 4 kg. Now when we are buying different quantities due to the price decrease, when the price is decreased, we are also buying the quantities in a, when the demand is also increasing. Now that is the individual demand. Understood? Understood? And when that information we show it in a tabular form, we say it as an individual demand schedule. When I individually जेतବେଳେ मु निजे घरर राशन धरकर किनिया को जाउची केजी जरकर चीनी केजी से वीक रे अछि 100 टंका तो मु केजी किनली तापर नेक्स्ट वीक को 90 टंका हला मु 2 केजी किनली 80 टंका हला 3 केजी किनली 70 टंका हला 4 केजी किनली. अंडरस्टूड? अंडरस्टूड के बुझि पालनी मत आउतर पचर मैम आउथरो टे बुझी देबे इंडिविजुअल डिमांड टा. सौम्या ओके सौम्या ये टेबल टा आउतर पढलु डेफिनेशन टा आउतर पढे. Sorry, my throat is Individual little bit demand today. schedule. It is the table which shows various quantities of a commodity that would be purchased at different price by the household during a given period. Okay. Now, Soumya, if you tu jaichu ration kiniba pai, ha, monthly ration, right? Monthly Yes. ration kiniba pai jaichu. धर कर चीनी केजी सेई वीक रे धर कर आज तू जाइछु ठीक अछि आज तू जाइछु ए वीक रे चीनी केजी होचे 100 टंका तो केते केजी किनिबु केजी है ना 5 केजी किन दउ kg. केजी किनिबु नेक्स्ट वीक गलु चीनी केजी प्राइस हला 90 टंका केते केजी किनिबु हेलो सौम्या ऑडिबल सुबह होची Yes ma'am. हाँ तो नेक्स्ट वीक गलु चीनी केजी 90 टंका हो जाइछि केते केजी किनिबु 2 kg. 2 केजी किनिबु माने तोर एठी जेतेबे प्राइस ते तोर कमुची डिमांड ता तोर बढ़ुची क्वांटिटी ऑफ डिमांड ता तो किनिबार बढ़ुची ना बढ़ुनी आज्ञा. बढ़ुची एटा तोर इंडिविजुअल डिमांड एटा तू जाइछु निजे इंडिविजुअली एते मु जाउची मे बी 100 टंका रे मु 5 केजी किन देबी मे बी 100 टंका रे प्राइस जेतेबे बढ़ुची आमे जिंसर डिमांड ता कमुची राइट Yes. Yes, बुझी ma'am. आसला एबे बुझी पाइलो टेबल टा कोन लिखी छी ए डेफिनेशन अनुसार बुझी पाइलो Yes ma'am. टेबल टा शो करूची प्राइस पर केजी और क्वांटिटी डिमांडेड पर वीक ओके जितबे 100 टंका थिला सेई वीक रे आई बॉट 1 केजी जितबे प्राइस कमिला मो डिमांड टा बढ़िला that is known as individual schedule demand. The whole presentation of that information in a tabular form says as individual demand schedule. बुझियासला Yes ma'am. बुझियासला आउ किछि डाउट रहले सौम्या No ma'am. एबे सुगर सॉल्ट रो एग्जांपल देके बुझ परिबु मते गोटे निजे एग्जांपल देके बुझेइलु कांसेप्ट ता मते गोटे एग्जांपल दे सपोज यू suppose I have a 10 rupees. ମୁଁ ସେ 10 ଟଙ୍କାରେ Are you explaining something? So my voice breaks कुछ actually. Is anyone saying anything? I don't think so. Anyone is saying anything. So मैं तो किसी कहूँचु no ma'am. अच्छा तुम एग्जांपल टा पचले एग्जांपल टा कौन देलु तू मते सुबिला नहीं किछि ମ୍ୟାମ୍ ମୋ ପାଖରେ 100 ଟଙ୍କା ଅଛି ମୁଁ ସେଇ 100 ଟଙ୍କାରେ ରାସନ କିଣିତେ ଯିବି ମ୍ୟାମ୍ ମୋର ରାସନ ହେଉଛି ସୁଗାର 100 ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ 1 କେଜି ସୁଗାର କିଣିବି ଯଦି ତା ପ୍ରାଇସ୍ ଡିକ୍ରିଜ୍ ହେଇଯିବ ମୋର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅନୁସାରେ Okay, very good, very good. Okay, so individual demand schedule बुझियसला
Okay, we will move to market demand schedule. Okay, Suman, slide apart. Suman. Okay, Laura, read the slide. Yes, ma'am. Ma'am, market demand schedule is the table which shows various quantities of a commodity that all buyers or consumers are willing to purchase at different prices during a given period. Ma'am, for example, earring or conches online, different sites provide different price. Okay. Now we will concentrate on the table. Okay, आमे समझते table को देखो. Left hand side रे लिखा है price. तापर लिखा है quantity demanded by A, quantity demanded by B, quantity demanded by C. Total quantity demanded A plus B plus C. Now suppose we will refer quantity demanded by A as an individual. Suppose A gote loka, B gote person, C gote person. Understood? Now the price of the earring. Suppose who all the people are you on Instagram? के समझते Instagram use करते हो? Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn. Who many Instagram use? Instagram. Suman कौन पूछो? Ma'am, Instagram. Instagram. Okay, so how many of people have you seen earrings which are being sold in Instagram? के देखी जो earrings सब Instagram रे sold कराओ जो? Yes, ma'am. देखी जो? Yes, ma'am. Now ये गोटे जने गोटे website earrings sell करछी ना जरा new selling the earrings. Ma'am, various sites. Various sites. And every time the price varies in different sites. गोटे earring रो गोटे वो site रे धर करो 10 टंगा रे मिलची तो आउ गोटे 20 टंगा रे मिलची आउ गोटे 30 टंगा रे मिलची एमती होची ना समस्त गोटे price. Yes, ma'am. Different price. Vary करूँ. Okay. Now सुमन गोटे website को गला सेठी से earring टा ताको 50 टंका रे मिलला तो सेटा किनला मु गली मते गोटे अलग site रो earring 40 टंका रे मिलला मु सेठू किनली सुश्री गला सुश्री को आ गोटे वेबसाइट रो इयरिंग मिलला दीटा ताको भल लागला से 100 टका देकी किनला नाउ वी आमे तीन जण जाको जते बेले जाई कि मार्केट रो कि आमे जते बेले जाई कि गोटे जिंस ऑर्डर करले वी हैव बॉट द सेम कमोडिटी दैट इज अ इयरिंग बट वी ऑल हैव पेड द डिफरेंट प्राइसेस आमे तीन जण अलग अलग पैसा देकी किनचे आमे तीन जण जाको गोटे समान पैसा देकी किनिने आमे तीन जण अलग अलग पैसा देकी किनचे जिते बड़े से तीनटा को हमें मिसई दबा टोटल क्वांटिटी डिमांडेड A plus B plus C इज इक्वल टू धर कर एग्जांपल अछि मु देछि गोटे इयरिंग रे दाम होछि 10 टंका तो डिमांड बाय A इज 5 डिमांड बाय B इज 4 डिमांड बाय C इज 1 10 A डिमांड कला 5टा से किनिबो B डिमांड कला 4टा से किनिबो C डिमांड कला गोटे से किनिबो ताकू जेते बेले हमें मिसई दबा टोटल डिमांड केते होछि 10 This is known as market demand. The sum of all individual demand is known as market demand schedule. Understood? बुझी आसिला? Yes, ma'am. समस्त बुझी पारलो? सौम्या बुझिलु? Yes, ma'am. अनिशा बुझिलु? मैम आउ थरे Yes, ma'am. ओके स्मृति अच्छा स्मृति धर कर तू गोटे इयरिंग किनछु गोटे वेबसाइट ठीक अछि तू इंस्टाग्राम यूज करछु Yes, आई विल टेक एग्जांपल ऑफ इंस्टाग्राम तू इंस्टाग्राम यूज करछु यस मैम अच्छा इंस्टाग्राम रे डिफरेंट देखि जो डिफरेंट क्लॉथिंग साइट्स भी अछि ऑफलाइन माने जो ऑनलाइन तुम किनि परिबो हैव यू कम अक्रॉस दैट यस मैम ओके नाउ गोटे Yes, क्लॉथिंग साइट अछि ना डिफरेंट क्लॉथिंग साइट अछि मैम डिफरेंट साइट्स डिफरेंट साइट अछि तते गोटे ड्रेस ते भल लागिला गोटे साइट रो तू ताकू सेठी 1000 टंका दे किनलु ठीक अछि मैंडेटरी नुह जे मते भी से साइट रु से ड्रेस ता भल लागिबा मु सेठी 1000 टंका दे किनबे मते आउ गोटे साइट रु भल लागि पारे मु सेठी ताकू मोर डिमांड थर कर मते से गोटे ड्रेस तते गोटे ड्रेस भल लागिला 1000 टंका रे तू गोटे किनलु मते सेम ड्रेस भल लागिला 1000 टंका रे मु 5टा किनबे ठीक अछि सुमन को भल लागिला 1000 टंका रे से ड्रेस ता से 10टा किनिबो
तो क्वांटिटी एठी अलग अलग हैला प्राइस सेम अछि बट हमर डिमांड अलग अलग हैला क्वांटिटी डिमांडेड अलग अलग होची Yes, बुझिलु ma'am. बुझिलु Yes, ma'am. गोटे गोटे प्राइस रे क्वांटिटी डिमांड केमती अलग अलग होची तो बुझिलु ग्राफ देखे क्वांटिटी डिमांड 10 टंका अछि क्वांटिटी डिमांडेड बाय ए होची 5 क्वांटिटी डिमांड बाय बी होची 4 क्वांटिटी डिमांड बाय सी होची 1 प्राइस गोटे थिबो किंतु डिमांड अलग अलग हेई परिबो डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स पर ठीक अछि आमे त सेम गुरबा को मिसई दबा व्हेन टोटल क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड मिसई जिवो सेतेबे ताको कहबा आमे होल मार्केट डिमांड बिकॉज़ मार्केट डिमांड इज the combination or the addition of individual demands understood एठी Yes, हमें ma'am. एग्जांपल पई तीनटा नेचे किंतु रियल लाइफ रे डाटा बहुत बड़ ब्रिटानिया एबे तार बाहर कर परिबो ना नहीं कि टोटल क्वांटिटी डिमांड केते हेची ब्रिटानिया कंपनी बाहर कर परिबो तार ना बाहर कर परिबोनी बाहर कर परिबोनी बोधे Yes, ma'am. Call परिबो. कर परिबो केमती करबो सेटा क्वांटिटी डिमांडेड बाय डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन गोटे विटा मैरी बिस्किट अछि ओके आई एम अगेन एक्सप्लेनिंग स्मृति आउतरे बुझ गोटे विटा मैरी पैकेट अछि तू जाई कि गोटे आनलु आ गोटे लोक जीवो 10 टा किनिबो आ गोटे लोक जीवो 20 टा किनिबो प्राइस गोटे अछि बट क्वांटिटी डिमांड एठी अलग अलग अछि सेई जो क्वांटिटी डिमांड टाको आमे यदि प्लस करि दबा ताकू आमे कहिबा टोटल मार्केट डिमांड स्केड्यूल understood sum of all individual buyer is equal to market demand schedule a plus b plus c for example screen रे देइछे देखिलो बुझियला ना और किछ डाउट रहला मैम मोर गोटे हाँ डाउट के सुमन हाँ का मैम इठी मैम प्राइस अच्छी फर्स्ट 10 रुपीस तो क्वांटिटी डिमांडेड 4 5 और 4 और 1 अच्छी तो प्राइस कमिले तो डिमांड बढ़िया कथा तो प्राइस तो कमिला 9 हैला तो डिमांड टांकर 3 2 हे गला कमी गला एक जनकर ना एठी देखे मार्केट डिमांड स्केड्यूल होची इंडिविजुअल डिमांड्स रो एडिशंस मु एबे जेति के किनिबी तू एबे सेति किनिबु कि धर कर प्राइस एबे 9 टंका अछि ठीक अछि मु मोर डिमांड होची मार्केट रे 3 आउ कहार हे परिबो 2 आउ के किनि परिबो 8 तो एठी हमर प्राइस सहित किछ लेन देन नाही एठी हमर डिमांड सहित लेन देन अछि तो बुझि परलु इंडिविजुअल डिमांड वैरी करिवो मार्केट डिमांड सेते बेले को आजिबो जेते बेले हमें सम करि दबा समस्त को इंडिविजुअल डिमांड बुझिलु यस मैम बुझे देखे सुन धर करे तू आमे तू मु स्मृति मार्केट जायचे ओके नाउ आमे तीन जन जाको गोटे इयरिंग स्टॉल को गले ठीक अछि मते गोटे इयरिंग भल लागिला ता प्राइस होची 9 टंका मु किनली 3टा तते सेम इयरिंग भल लागिला प्राइस जार होची 9 टंका किंतु तू किनलु 2टा स्मृति को भल लागिला 9 टंका इयरिंग से किनला 8टा तो आमर एठी क्वांटिटी डिमांड अलगा अलगा हबो जते बेले क्वांटिटी डिमांड अलगा अलगा हबो प्राइस गोटे रहइबो ताको हमें जते बेले एडिशन करबा ताको हमें मार्केट डिमांड शेड्यूल करबा बुझी असला यस मैम नाउ किछ डाउट रहला नो मैम okay now we will read about demand curve okay suman next slide ta pad Ma'am, demand curve. The demand curve is a graphical representation of the relationship between the price of a good or service and the quantity demanded for a given period of time. In a typical representation, the price will appear on the left vertical axis and quantity demanded on the horizontal axis. Price is the independent variable and quantity the dependent variable. In most disciplines, the independent variable appears on the horizontal or x-axis, but in economics is an exception to this rule. The demand curve will move downwards from the left to the right, which expresses the law of demand. okay now what is demand curve एटी गोटे प्रेजमोट पिक्चर टे रखिछि देखाउछि समस्तनको Yes, ma'am. the left side होची प्राइस हमर x axis होची प्राइस हमर लेफ्ट साइड होची प्राइस एंड द बिलो वन इज द क्वांटिटी डिमांड ओके नाउ जते बेले हमें ए जो ग्राफ ता फर्स्ट म तुमको फर्स्ट नै जाउची धर करे ए जो ग्राफ ता हमें धर करे ए जो डाटा रे हमें ओटे ग्राफ करबा ओके
अगर हमें तो गोटे ग्राफ कले देन ता लाइन जो आसीबो धरकर हमें ग्राफ प्लॉट कले पॉइंट्स प्लॉट कले तार जो लाइन ता आसीबो से लाइन ता को हमें कोन कहूचे डिमांड कर्व जोटे एटा लिखा हिची ए जो मुसाटा बसचे ता ऊपर जो लाइन ता जाईची से जो डिमांड कर्व लिखा हिची हमें से लाइन को कहन जाए डिमांड कर्व दैट लाइन इज नोन एज डिमांड कर्व which slows the plot of price plus quantity demand हमें तो प्राइस टंका क्वांटिटी डिमांड हमर 100 टंका प्राइस 2 टंका क्वांटिटी डिमांड हमर 200 टंका जहां भी हबो से जो प्लॉट करबा हमें से जो ग्राफ टा को न्यूमेरिकली प्लॉट करबा से जते बेले प्लॉट हबो लाइन टा जते बेले हमें जॉइन करबा जो सीधा लाइन आसीबो कि जो भी ओटे स्लैंटिंग लाइन आसु से स्लैंटिंग लाइन की सीधा लाइन को हमें कहबा डिमांड कर्व अंडरस्टूड अंडरस्टूड प्राइस हम रिप्रेजेंट करबो आउटर एक्सप्लेन करिवे okay Yes, ma'am. okay now see if I will represent 1 second just give me 1 moment I will explain it in the graph to you one second okay so everyone just look at the screen for just 1 minute okay see price quantity and जो सीधा गारटा मु टाणले आम पाखरे गोटे टैबुलर इंफॉर्मेशन थाए ओके दिस लाइन इज नोन एज डिमांड कर्व ए लाइन टा कोट आसीबो ए लाइन टा मन को मन एठी टाणी बनी तमे द लाइन इज ऑलवेज जनरेटेड फ्रॉम ए टैबुलर इंफॉर्मेशन फॉर एग्जांपल ए जो जिंसटा एठी अछि प्राइस 1 रुपीस द क्वांटिटी डिमांड 800 यदि तमे गोटे एक्स एक्सिस रे हमें प्राइस नहीं जिबा this we will take the price and we will take the quantity demanded okay when we will plot the graph will form like this something like this empty hobo this line is known as the demand curve ये जो line ta form hobo after we put the price and quantity demand then there will be a graph okay सदा गोटे मन रखिबो demand curve माने graph there is always a graph with associated with demand curve this graph and here this line shows the demand curve बुझी आसला स्मृति बुझी आसला आगे ma'am. ओके मैम हाँ मैम ए जो डिमांड कर्वटा आपण जो गोटे स्लैंटिंग लाइन लेले सेटा तो जेमती शेप रो भी हे परिवो हाँ एक्जेक्टली हबो तो बिकॉज एवरी टाइम यू विल नॉट गेट द माने हमको सदा बेले गोटे डाटा जते बेले गोटे ग्राफ फॉर्म करा पे मिलबो ता माने एटा नो जे एटा सीधा लाइन आसो से लाइन टा एमटी टिके बंका बेसे पारे से लाइन टा एमटी आउ भी टिके बंका आसे पारे ओके देन दैट इज नोन एज डिमांड कर्व so लाइन टा जेमिति भी हो so लाइन बंका हो सीधा एक लंबी भी जाओ so that line is known as demand curve okay here there will be numbers it is 0 1 2 3 4 Ma'am? एमती रहइबो and here and the below we will represent 800 hello मैम से लाइन ता हाँ, डिमांड बोलो, कर्व लाइन में सबरे डिक्रीज करिवो लाइक अप रो डाउन रहिवो it is always represented from left right तमे जते बेले गोटे ग्राफ पॉइंट करिचो ला ग्राफ जते तमे करिचो ग्राफ ता तमे एउठु जोड़ो ना एउठु जोड़ा जाए लेफ्ट जोड़ो ना राइट जोड़ा जाए उल्टा जोड़े के ना लेफ्ट जोड़ा जाए we will always plot we will always join the dots from left to right not right to left empty के जोड़े नहीं किए ग्राफ because empty कले graph will not come in a proper shape जो shape रे आसिया कथा always we go from here to here either we go in straight either we go in this like this okay that is known as demand curve this line is known as the demand curve understood मैम यस मैम हाँ मैम हाँ जो सुमन मैम लेफ्ट रू राइट को करबा बट एटा जो तळ को आसुची एमती तळ को आसुची राइट साइड को तळ को पळे आसुची सेटा ऊपर को भी तो हे परिबो सदा बेले ग्राफ टा एमती तळु को बाबा केबे एमती ऊपर को हे परिबो नो मैम बा पटरो तळ को हे कि एमती डाहन हाँ। पट को सदा बेले ग्राफ टा बा पत्र तळ को ही जाए केबे ऊपर जाए नहीं केबे
नो Understood? मैम मैंने से जो लाइन टा बटन माने लेफ्ट रो राइट तळको आसला मैम पूरे राइट रो हाँ। अप ऊपर को जाई परिबनी अपोजिट साइड रे मैम तो अपोजिट साइड रे अप Opposite केबे side जाई परिबनी up we will read that in the next slide. Okay, we will read that in the next slide. First आगे मुझे demand कर आगे कह understand the concept one by one, then जाएंगे सब sum up करला बेले you will understand whole summary. I will not jump from one to other. Okay, एटा बुझिलो डिमांड कर का खुआ जे बुझिलो ग्राफ रे डिमांड कर पर चले कहि परिबो कोटा डिमांड कर this one बुझिलो सुमन आमे स्टेप बाय स्टेप जवा बुझिलो understood? यस मैम Okay. Okay, now what is law of demand? Okay. Law of demand is a fundamental principle of economics that states that a higher price consumers of quantity of a good. Law of demand माने जेतेबेले price बढ़े demand कमे, price कमिले demand बढ़े. That is law of demand. Okay. এটা হচ্ছে universal rule, এটা হচ্ছে universal statement of law of demand. কে বুঝি পারলেন? এতিকে যাই কে বুঝি পারলেন? কে বুঝি পারলেনি? কে বুঝি পারলেনি? নলে নেক্সট স্লাইড যাবা আমি। Yes, ma'am. समस्त बुझी पारलो? Why only two students are interacting? I don't understand. There is Laura interacting or Smriti interacting, Suman interacting. Why there are not other students who are interacting? Sushri, Anisha. Why? See, तमर जेतिके भी doubt थिबा ना कि जहाँ भी उठे question थिबा, when you ask, then only I can know कि तम कोनटा बुझी आसला कोटा बुझी आसला नहीं. It's better to interact. Always in every class I would recommend the same thing. That is interaction. Interaction कॉले ही doubt बुझी हबा. Interaction कॉले economics will not be assumed as a very difficult subject or boring subject. It will be an interesting subject. আমি যেতেবেলে নুয়া নুয়া example, it's not like I know everything. ମୁଁ ସର୍ବଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତ ନୁହଁ. Okay, when you people will come up with some innovative examples also, this I will learn from that. Learning goes in both ways, not in one way. I am only here teaching you because I have certain knowledge or experience in that field, but I am open to learn from all of you. It's not that कि मते सब जଣା अछि. I learn from you also. तम मानकर जेतिके भी डाउट थिबा, तम मानकर जहाँ भी थिबो, if you guys speak up, then ମୁଁ ବି କିଛି ଶିଖି ପାରିବି. ମୋ ମାଇंड को भी କିଛି नुआ एग्जांपल आसी परिबो. मे बी तम पाखरे କିଛି आईडिया थाई पर जोटा मो पाखरे नथिबो. Understood? Okay, that is the meeting timeout ହେଇଯିବ. So we will join again. One thing you do guys, join again. Okay, I'll join again. I'll stop sharing.